Said say this is Sir Khalid Salim, and today we are going to finish the last topic of articles of faith that concerns Allah Subhanahu wa Taala, and that topic is shirk. Okay, let's read about it. The Arabic word shirk means to share. ठीक है, shirk का मतलब है share करना. In religious sense, it means associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. But if you look at it from a religious viewpoint, it means to associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. That is, if a person considers someone else as a partner in the being of Allah, in his attributes, he commits shirk. It means that a person who believes that another person possesses the same attributes or same powers as Allah subhanahu wa ta'ala, actually that person would be committing shirk. Okay, that is to associate partners in the worship with Allah subhanahu wa ta'ala and to bestow the qualities and the features of Allah subhanahu wa ta'ala onto someone else. There's an Arabic proverb, things become known through their opposites. Okay, so एक अरबिक कहावत है कि चीज़ें जो हैं अपने ऑपोजिट से पहचानी जाती है. फॉर एग्जांपल it means that if for example you have not seen any hardship, ठीक है, if you have not seen any grief, you have not seen any sorrow, so you would not be able to understand what real happiness and true joy is. ठीक है, so चीज़ों को पहचानना, चीज़ों को फील करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव नेवर सीन ग्रीफ, अगर आपने कभी सॉरो नहीं देखा, ठीक है, देन यू वुड नेवर नो द ट्रू वर्थ और द ट्रू blessing of being happy. ठीक है, so this actually proverb means this. ठीक है, in the light of this saying, it is necessary to understand the nature of shirk for a better knowledge of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, अब shirk से जो है they would be telling us कि किस तरह जो है वो नेचर ऑफ शेक हमें जो है वो बेसिकली पता चलेगी. ठीक है, द अवॉइडिंग ऑफ शेक एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ अ फंडामेंटल टीचिंग ऑफ कुरान बिकॉज शेक इज़ नथिंग बट द रिवर्स साइड ऑफ तौहीद. अब शेक क्या है? ये रिवर्स साइड है. ठीक है, तौहीद की रिवर्स साइड है. इट मीन्स दैट यू आर एसोसिएटिंग सम पर्सन अलॉन्ग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है, और आपकी जो इस्लामिक टीचिंग है तौहीद की, वो क्या है? वो एक फंडामेंटल टीचिंग है. दैट मीन्स दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है, लेकिन शिर्क क्या होता है? इट्स जस्ट अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ इट. Okay, given the fact that the proclamation of Tawheed is the first pillar of Islam and Tawheed itself is the first principle of Islam, one begins to understand why Shirk is so strongly criticized and why, according to the Holy Quran, it is the only unforgivable sin. ठीक है, अगर देखें तो पहला जो पिलर है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. ठीक है, दैट इज़ योर तौहीद. ठीक है, और तौहीद जो है वो बेसिकली पहला प्रिंसिपल भी इस्लाम का है. ठीक है, इफ़ यू स्किप द फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ़ यू corrupt it, then the rest of your deen it's going to be muddled as well. ठीक है, so the first thing about tawheed, it should be clear, it should be free from shirk, it should not have any association of other things or other people or other gods with Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, in his dominion. Okay, so a few ayats have been given over here. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala forgives not that a partner should be associated with him, but less than that, he forgives whoever he wills. So it is in surah 4 and verse 48. ठीक है, तो अल्लाह ताला कभी भी forgive नहीं करते कि उनके साथ कोई पार्टनर एसोसिएट किया जाए, लेकिन अगर उससे कम किसी ने कोई गलती की, मतलब इस चीज़ को छोड़ के किसी ने कोई दूसरा गुनाह कर दिया, तो वो अल्लाह ताला जिसको भी चाहे उसको फॉरगिव कर सकता है. इफ़ समवन एसोसिएट्स एनी अदर्स विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह विल प्रोहिबिट पैराडाइज टू हिम. प्रोहिबिट का मतलब है मना कर देना. ठीक है, तो अगर अल्लाह ताला के साथ कोई एसोसिएट करता है किसी भी पार्टनर को, तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जो है वो जन्नत मना कर देंगे. ठीक है, सो दीज आर लाइक द टू यू कैन से ayats that negate the practice of committing shirk. Okay, the acknowledgement of unity of Allah subhanahu wa ta'ala is bound in human nature, फितरा. तो ये अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि ये इंसान की फितरत के अंदर है कि he already knows it in his heart that there is just one God. ठीक है, there are not many gods.
since human beings were created with the knowledge that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. So it has been like pre-programmed in our minds and souls that we internally believe that if there is a God, there is only one. Okay? So it's natural, it's fitra. The prophets were sent to remind them of what was already in their original nature. So, जब इंसान बहका, he started uh, straying from the right path. So what happened? Allah subhanahu wa ta'ala, He sent messengers so that those messengers could guide them back on the right path and remind them what was already in their original nature. Okay, hence to associate others with Allah subhanahu wa ta'ala is to go against the most fundamental instincts of the human species. सो इसलिए वो कहते हैं कि जी अगर आप अल्लाह ताला के साथ कोई चीज़ एसोसिएट करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप अपनी जो फितरत है आपके टोटली उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है कि आपकी जो सेंसेस वगैरह भी होती हैं, ठीक है। इट इज़ सो टू स्पीक टू गो अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। तो उसका एंड मतलब यही है कि इट मीन्स टू गो अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। अच्छा जी, हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज़। पहले तो आपने बताना है वर्ड इज शेयर, ठीक है। एक तो आपने उसको वैसे एक लिटरल मीनिंग में बता देना है, इट मीन्स टू शेयर, एंड इन रिलीजियस सेंस इट मीन्स टू associate some partners with Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है। and associating partners having his attributes, ठीक है, it is also called committing shirk, ठीक है। इसके बाद आप ये कह दें कि it is there's a famous Arabic proverb, things become known through their opposites, ठीक है। then you can say क्या कहते हैं इसको अपना, हाँ, दैट शिर्क इज़ नथिंग बट द रिवर्स साइड ऑफ तौहीद, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ तौहीद इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम एंड तौहीद इटसेल्फ इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये आपने लिख लेना है। इसके बाद शिर्क हैज़ बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड इन द होली कुरान। then you're going to mention these, अगर ये दो कर दे, it would be the best thing that you can do. And then you can talk about how the concept of divinity it is embedded in human nature, and people already know uh, uh, through their instincts that there's only one God. So committing shirk is like going against the natural is going against the human nature, आप कहते हैं, ठीक है। So it would be a very short question and I hope you do it in your copies, and inshallah from Saturday I believe we are going to start the last topic in this chapter. It has to do with declaration of faith, shahada, ठीक है। So inshallah we'll be done with our syllabus, and I hope that you are learning writing in your copies and learning it, and make sure you study good because you'll be having an annual exam and your syllabus is complete, and start revising your syllabus. Okay, thank you. Allah Hafiz.